So if you look at the pointers, हमने जो बेसिक बातें उसकी पढ़ी थी वो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। हमने कहा था कि पॉइंटर्स के साथ बेसिकली दो तरह की चीजें बनती हैं, एक फ्रैगमेंट और एक सेंटेंस, right? So whenever you find a pointer and there is an al after it, it's a fragment. बिल्कुल That's what we said. Okay? So it's going to be a fragment if you find an al after it. But if you find a pointer and it does not have an al after it, it becomes a sentence. then it's a sentence. Okay? But for the fragment, it's important that the four properties match. Okay? A pointer and the ism it is pointing to, four properties must match. If you want to know the Arabic terminology, pointer is called ism ishara, and the ism that is pointed at is musharun ilay. Just like mudaf and mudaf ilay, like ishara and musharun ilay, if you want to do that. It's not important for you to remember this right now, but just so you know. Take it. Same. So, effectively, we also said that all of these pointers that you did last time, they at least all of this part is inflexible, Flexible. and all of this part is inflexible. We also said that this part is inflexible and this part is inflexible, right? Very good. And in the middle, I mean, although there is some sort of difference from the first column and the second column, you can kind of tell what is the status. So, for example, Hazani and Hatani, you can tell the status. It's Rafa. Rafa. Very good. Yeah. But here in Hazaini and Hataini, you're still confused. It's either Nasab or Jar, right? Context will tell you. Because of that, we said, okay, they might be partially kind of flexible. Not the typical partially flexible sense, but basically just like a Muslimaini problem. We had Muslimani, Muslimaini, Muslimaini. Yeah. So you have to see the context to find the status. Same case is here. Zanika is completely clear. Rafa, Tanika is clear. Rafa, Zainika, context will tell you, and Tainika, context will tell you. Okay, so that's what we did last time. If you look into the Quran specifically, so you will find lots of haza, hazihi, zalika, tilka, haulai, and ulaika. Lots of it. You will hardly find these in the middle. Okay, so I'll do a quick search for you here. You know, for example, if I search haza, so let's say I search haza, so you'll find loads of haza. So there are 21 pages, there are 227 results of haza. Yeah, but if I say hazani, it's just two. Okay? So if I say hazaini, there are probably none. It's not used in the Quran. Okay? So just like that, you have zanika. There's if you search for zalika, you'll probably find it loads of time. Okay? If you say zanika, there's none. Okay? And if you look for zainika, there's none. ठीक है, तो ये जो middle वाले हैं, they're not used in the Quran as such, other than this hazani primarily 2 times. So all of this from this point all the way to this point, ये वाला जो section है, that is for you good to know. Okay, good. ठीक है, from the Quranic standpoint. For Arabic, absolutely to know. But for Quran, you shouldn't be too worried about this. So आपका जो ज़्यादा रोल होगा वो हाजी ही और इनके साथ कुरान के साथ होगा most likely. ठीक है? See. So let's do few examples जो हमने last time की थी ये concepts. So let's try to see how fragments are operating in the Quran. So these are all Quranic examples. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Now, if you're just looking at Hazal Bayt, we will say it's a fragment because there is a al
after the haza. Mm-hmm. Okay, so it's a fragment. This would mean this house. It is not going to give you full information. Mm-hmm. Okay? Fi hazihi al hayati ad dunya. Now, in this case as well, you see, hazihi is followed by al hayati. There is an al here, so it's a fragment. Okay, just note down four because the four properties has to match. So if Hayati is feminine, Hazihi has to be feminine. The exercise we did last time, right? Mm-hmm. Sometimes from English perspective, pointer is not making sense for you है तो आप कह these रहे हैं लेकिन लिखा हुआ this है Arabic के अंदर. But that's the problem of English mindset, not Arabic mindset. है? So उनका mind ऐसे नहीं चलता. So that's what you need to be careful of. Now, if I ask you, do you know what is the status of Hazihi here? Any idea? It will be jar, And singular, what tells you it's Jar? he. Because al hayati is the ending sound is jar. Okay, so there's one way you find, let's say this Hayati is Jar, so it has to match, therefore Hazi is Jar. Hazihi Is is jar. one algorithm is this, agreed. Okay, but what if Hayati is non-flexible or partly flexible? Then you'll get stuck, right? Okay. If it was Musa, Hazi Musa, this Musa, I'm just giving a bad example, but you will get stuck, right? There has to be a better way. Whenever you want to find a status of a pointer, look for the words before it. Look for the words before it and see if you can find something. Mm-hmm. So if you look at Hazihi, Junaid, what do you see before it? Uh, in the first one or second? Fee. Fee, right? Fee. कुछ पता है फी के बारे में? दोस्त रहा है आपका एक जमाने में ये, Fee. नहीं, अभी ध्यान इसलिए नहीं आ रट्टा लगवाया था. हर्फ ऑफ याद है? रहा. Yeah. He- Uh, बाता, yeah. Yeah. वो वाले हर्फ ऑफ जर जो है, Mm. बाता काफ लाम वाव मिन फी Fee. अन Min. Fee. अला हत्ता इला, right? And that's why it's important to memorize them. ठीक है ना? Memorize. जी जी हाँ. बिल्कुल. So now you're looking at fee. Because you know fee is a harf that makes the next ism jar. jar. And that tells you hazihi is jar. Oh. Actually, if you think closely, if you're writing Arabic, imagine करें आप book लिख रहे हैं Arabic के अंदर. You are going to write fee first and then hazihi second. You're not going to go and write the full sentence fee hazihi hayati and then decide what status I have to give to the words. Right? Mm. You will decide as you write. ऐसा नहीं सही. होगा कि हयाती पहले लिख के फिर डिसाइड करेंगे अच्छा हाजिही को क्या बनना है, राइट? Exactly. No. तो यू हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू फाइंड द स्टेटस रियली. हाँ, ये वाली जो ट्रिक थी कि हयाती भी जर है, ऑफ कोर्स दीज ट्रिक्स आर देयर, Mm. बट दे आर नॉट दे शुड नॉट बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट्स. सही. ठीक है, सो लुक फॉर द कॉन्टेक्स्ट. सो नेक्स्ट होमवर्क आपके लिए भी और जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है उसके लिए भी. ठीक है, हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नसब, सब पक्का वाला रट्टा लगाना है यार. Mm. पक्का वाला, जैसा आप डेटा एनालिटिक्स में करते हैं ना काम, उस तरह बिल्कुल. का सही. पक्का वाला, अदरवाइज यूल स्ट्रगल. ठीक है. Mm. अम, अच्छा जी, हाजल कुरान, अगेन अ फ्रैगमेंट, हाजा फॉलोड बाय एन अल, दिस कुरान. ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स कुरान से ही आई हैं. इस इन नोट्स में एवरी एग्जांपल दैट यू सी इज फ्रॉम द कुरान. Every word is in from the Quran. ठीक है, so when you're doing this, you're actually working with the Quran as your workbook. सही. ठीक है. जी बिल्कुल. um, tilka hududullahi. Now, do you think it's a fragment? No. Tilka hududu? No, नहीं. because there's no al after it. Mm. So अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं. Now, tilka is, do you remember if it is a masculine
pointer or a feminine It's a pointer? feminine. It's a feminine pointer. Means that, right? Now, hudud is a broken plural. Okay? It means boundaries. Boundary. Okay? Broken plural. So when you have a broken plural, you have singular feminine, especially when it is non-human. Because hudud is singular feminine, instead of using ulaika, they've used tilka. Tilka. Okay? These are So, subtle things that you have to keep in mind. So, mm, tilka hududu. Now, when you have a sentence, you would generally put is or are between them here, like you see in this example. There's a are in the translation. but But जी tilka, तो that क्या उसमें आता है? जी जी तो मैंने क्या बोल दिया नहीं नहीं, दैट पर ये तो those are the boundaries. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैं वही आपको समझा रहा हूँ कंफ्यूजन जहाँ पे होती है लेट्स डू इट हियर सो वी हैव ulaika that was our actually original candidate was supposed to be ulaika ठीक है क्योंकि दोस्त की जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो उलाइका है ना ठीक दैट्स है। सपोज टू बी द वाज सपोज टू बी द वर्ड एंड और जब हम हुदूद कहते हैं हुदूद तिल उलाइका हुदूद ठीक है नाउ if I'm an English speaker I would say ulaika is those ulaika is those and hudud is boundaries ठीक है that's how I am speaking thinking as an English speaker right but problem with this is the four properties don't match ulaika is rafa single rafa plural masculine or feminine proper that's ulaika with me or not बिल्कुल। Yeah. ठीक है hudud पे आ जाते हैं hudud is rafa singular because it's a broken plural feminine because it's a broken plural and common right now ठीक है मैं इस सेंटेंस को पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे ठीक है सही। that is the case with hudud but if you look closely hudud is also light with no al right Yeah. if it is light with no al what is the possibility क्या हो सकता है ये Um, जब मैं याद करा दूंगा कोई मसला नहीं है जब अकेले पढ़ते हैं ना तो ऐसा ही होता है सही बात। वो वाला माहौल ही नहीं बना हुआ था मैं बता हाँ, देता हूँ आपको कोई मसला नहीं है जब आपको पता है इसम जो होता है इट कैन बी लाइट इन फोर सिनेरियोस सही है आइदर यू आर कॉलिंग समवन हम्म, or it is categorical negation or it is partly flexible and there was a fourth reason do you remember the fourth reason नहीं। पढ़ाई नहीं की हाँ when it is a mudaf ओ, मुदाफ ठीक है मुदाफ। मुदाफ मुदाफ इले पढ़ा था ना लाइट नो लाइट अल सो नॉन। जब भी लाइट नो अल कहा जाया करे तो आपके माइंड में फौरन मुदाफ आना चाहिए ठीक है सही। so hudud is light and no al and how do we prove it's a mudaf it must be followed by an ism that is in jar इंजर। या। and here we have ठीक है now because the ism after the mudaf is proper it will make the ism before it will make the mudaf proper remember that rule if the बिल्कुल। word after of is proper it makes the word before of प्रॉपर। proper प्रॉपर। so ये जो मैंने four properties की थी I will change the C to P या। ठीक है सही। right? Now अब आप देखिए उलाइका और हुदूद को हम चेक कर रहे थे हुदूद इज रफा सिंगुलर फेमिनिन प्रॉपर
and ulaika is rafa plural masculine proper. So because ulaika is also same in feminine, I can say okay chalo it's not masculine, it's feminine. मैं m को काट देता हूँ. Mm-hmm. But still I can't change the plural. I cannot match the properties. Clear or not? समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रहा नहीं, हूँ कि नहीं? वो तो मुझे क्लियर है जी बिल्कुल, कि हमें जी उसको, हमने तिल का क्यों यूज़ किया, और फिर हमने उसको यूज़ करेंगे एज अ प्लूरल इन द जी सेंस ऑफ मीनिंग। पर जो मेरा क्वेश्चन है कि अभी अगर हम हदूदुल्लाह को सिंगल, क्योंकि वो था नॉन ह्यूमन था, मल्टीपल था, तो हमने उसको सिंगल फेमिनिन कर दिया, जी. पर उसको हम 3+ फेमिनिन भी तो कंसिडर कर सकते हैं। When it is human. अच्छा, सही। जब वो, 3 हाँ, प्लस मैस्कुलिन होगा उस केस के अंदर. 3+ मैस्कुलिन होगा। वो जो बिल्कुल केस है बिल्कुल रियलिटी वाला ओनली अप्लाइज टू ह्यूमन ब्रोकन बिल्कुल प्लूरल्स. बिल्कुल, सही। ठीक है. So because we were not able to match these properties, so we wanted a pointer that actually matched these properties, and हम्म, that pointer is tilka. सही। हमने ठीक वर्ड है. तिल का यूज़ किया, और उसको जी बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, उसका जी. मीनिंग दोस्त। अगेन मैं आपसे कहूंगा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अरब्स का प्रॉब्लम नहीं है. ये बेसिकली, हाँ। ये हमें एज इंग्लिश स्पीकर्स कंफ्यूजिंग लगता है, हम्म क्योंकि अरेबिक एंड इंग्लिश डज नॉट गो वर्ड बाय वर्ड. हम्म Right? So for Arab, tilka hudud is perfectly fine Arabic, हम्म normal. बट जब हम यहाँ देखते हैं हम कहते हैं अरे लिखा हुआ तिलका है और ट्रांसलेट दोज हुआ है. हम्म, That's where the confusion kicks in. So you have to look at it from the perspective of an Arab. ठीक है. सही। And that is why it's important to understand the grammar. ठीक है. अदरवाइज आपको ये सेटेलाइट ये जो चीजें हैं छोटी छोटी ये समझ नहीं आएंगी ट्रांसलेशंस के अंदर. तो इज इट क्लियर व्हाई इट इज दोज एंड व्हाई इट इज हम्म, तिलका हियर? बिल्कुल, या। अब ये अगला केस आप देखें, उलाइका अस्हाबुन नार. राइट. नाउ हम्म ashab is companions, again a broken plural, हम्म, but this time it's human. सो वी यूज्ड लाइक। Right. So we can use reality. So we know it's 3 plus masculine. ठीक है. हम्म So 3 plus masculine के साथ we can then use ulaika. No problems there. ठीक है. Could I have said Would I have said tilka ashabu? Absolutely, because broken plural, when it's human, can be assigned singular feminine, right? हम्म So वो केस भी बनता है इधर, आप कर सकते हैं. और उसकी भी एक विजडम है, एक हिकमत है कुरान के अंदर. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कुरान में. अम, अब एक पहले उसको करने से पहले एक चीज कर लेते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है वर्ड रसूल, और इसका प्लूरल याद है जुनेद क्या होता था? रसूल। रसूल का. जी बिल्कुल. रुसुलन. दिस इज द प्लूरल. नाउ दिस इज अ ब्रोकन प्लूरल ऑफ द वर्ड रुसूल. अगर इसकी आप 4 प्रॉपर्टीज करें आप कहेंगे मोस्ट लाइकली रफा, 3 प्लस, मैस्कुलिन और कॉमन. राइट. बिल्कुल। और अगर आप उसको सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करें तो रफा, सिंगुलर फेमिनिन, कॉमन. दैट्स व्हाट यू विल से. ठीक है. अगर आपने इसके साथ अगर आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है दिस और ओके दैट messenger of Allah. Let's try to construct this. So that we know is Zalika. Okay. हम्म Rasul of Allah. In fact, मुझे that messenger नहीं मुझे कहना है those messengers of Allah. That's the example I'm taking to. Those messengers of Allah. Those आपको पता है is ulaika. लाइक, जी। ठीक है. ulaika. um, ulaika. अब आपको messengers पता है rusulun. ठीक है. Which is rusulun. रुसु रुसुलो. और अब ऑफ अल्लाह लगाना है तो मुझे पूरा मुदाफ बनाना पड़ेगा. मुदाफ मुदाफ इलैह. राइट. रुसुलुल्लाहि. बाजी। ठीक है. अब असूलन देखा जाए दिस शुड बी द कंस्ट्रक्ट.
right? But rusulun is either 3 plus masculine, okay, or singular feminine. So I could have said ulaika. This is also 3 plus masculine. It's perfectly fine, right? But I could also say tilka, right? It is the tilka, tilka rusulun. Because tilka is going to match with these properties of rusulun, and ulaika is going to match with these properties of rusulun. So both constructs are possible, right? So समझ आ रहा है आपको ये पॉइंट? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फ्रॉम द इंग्लिश स्पीकर स्टैंड पॉइंट देखें तो आप दोनों को कह सकते हैं, दोनों एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू दोज मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, बोथ ऑफ देम। तो व्हाट्स द डिफरेंस? और इसके पीछे पूरी बलागत स्टडीज होती है, रिटोरिक स्टडीज कुरान की। अब आप कुरान को और अल्लाह ताला दोनों तरह यूज करते हैं कुरान के अंदर। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तिल का रसूल की एग्जाम्पल शायद मुझे मिल जाए। अ, ये देखिए नंबर 2 में तिल का रसूल। अब तिल कर ये फ्रैगमेंट की एग्जाम्पल है, सेंटेंस की नहीं है। तिल कर रसूल, ठीक है, दिस इज अ बिल्कुल, फ्रैगमेंट बिकॉज देयर इज अल आफ्टर तिल का, बट व्हाई तिल का? Rusulun is 3 plus masculine as well, right? And it's human broken plural. But both are used in the Quran. और उनकी रीजंस होती हैं। कई दफा रीजन इज क्वांटिफाइबल। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव टू talk about very large number, they use broken plural. Sometimes less than 10 or 15 numbers you use normal plural. So there are reasons जो कि आगे एडवांस स्टडीज में कभी पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सही। अ, जी पर क्वेश्चन सॉरी एक और मेरा इसी पे ही है। जी अब जो आपने अब रसूलन है, जी। ये तो ह्यूमन के उसमें नहीं आएगा? नहीं, कम कि हम कंपेनियंस कह रहे हैं कि कोई भी कंपेनियन हो सकता है, मतलब Rusulan वो कुछ भी is एनीथिंग। Rusulan is broken plural and it's human broken plural. ठीक है। तो फिर हमने रु- उसको सिंगुलर फेमिनिन। आपको याद होगा जब हमने ब्रोकन प्लूरल्स पढ़े थे, हमने कहा था कि ब्रोकन प्लूरल्स जब ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स, दे कैन आइदर टेक सिंगुलर फेमिनिन और रियलिटी। डू यू रिमेम्बर नॉन, दिस? बिल्कुल, अच्छा। और जो नॉन नॉन ह्यूमन थे सिंगुलर ब्रोकन प्लूरल, फेमिनिन। दे आर ऑलवेज सिंगुलर फेमिनिन। सॉरी, दैट्स व्हाट वी सेड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? जी, बिल्कुल। दैट्स व्हाई, सो इसलिए इस सिनेरियो की वजह से ये बोथ केसेस पॉसिबल है। सही, बिल्कुल। ठीक है ना? और कुरान में दोनों यूज होते हैं। अब यहाँ पे उलाई का अस्हाबुन नार, आप अब देख रहे हैं ये वाला नॉर्मल केस है। इन्होंने यहाँ पे अल्लाह ताला ने अस्हाब को 3 प्लस मैस्कुलिन कंसिडर किया है। ठीक है। एंड अगेन अस्हाबुन नार आप देखेंगे देयर इज अ फ्रैगमेंट गोइंग ऑन हियर। डिटेक्ट कर सकते हैं? मुदाफिल है, मुदाफिल है। मुदाफिल है। कंपेनियंस ऑफ द फायर। So those companions of the fire, ठीक है? Or those are the companions of the fire, not those companions. The difference between those companions of the fire and those are the companions of the fire is a sentence versus fragment. Can make a major difference. So there is an R here, हम्म, and there is no word in Arabic to represent. Basically, it's hidden. सही, Hazihi naqatallahi. Now, naqatu is she camel. ठीक है। Okay. Now, this is again a sentence because they both are feminine, therefore hazihi, or how hazi looks common, but because it's a mudaf ilay, nakatu becomes proper because of the word Allah, right? So that's how the constructs go. So let's do some practice. हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि
which one is a fragment and which one is a sentence primarily. Mhm. It's an easy exercise. अच्छा We'll try to do a little bit more than that. अच्छा, फ़ाद भाई सॉरी एक और जी क्वेश्चन मेरा से। जी बताइए। अब आपने मुझे कहा कि जी जैसे अब हमने हाज़े ही का अगर हमने स्टेटस करना है कि वो नस्ब या जर है, जी वी शुड लेट द प्रीसीडिंग वर्ड। जी व्हाट इफ कि वो स्टार्टिंग वर्ड हो सेंटेंस का? preceding, look at the preceding words. अच्छा वर्ड्स। Sometimes it can happen कि let's say हर्फ ऑफ नस्ब है जी, जी। और उसके बाद बहुत कुछ दो तीन वर्ड्स हैं और उसके बाद पॉइंटर आ रहा है, राइट? सही। तो And because it tolerates long distance, सही, so you just can't rely only on the preceding word. Sometimes you do have to go back a little bit. सही, ठीक है? ठीक। Fine. अच्छा जी, नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। बी हाजल हदीसी, लेट्स ट्राई टू फ्रैगमेंट, फाइंड इफ इट इज सेंटेंस और अ फ्रैगमेंट। ये तो फ्रैगमेंट। दिस इज अ फ्रैगमेंट, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कैन यू टेल मी द स्टेटस ऑफ हाजा, अ, मेरे पास वही बात है कि कोई प्रीसीडिंग वर्ड नहीं है। इज इट, क्या लिखा हुआ है, हर्फ इसको पढ़ें जरा। बिहार ओह बी इज़ हर्फ ऑफ जार। जी, नाउ वी आर टॉकिंग। अब डेटा जी, एनालिटिक्स अप्लाई किया ना, हाँ, ठीक है। बी इज़ हर्फ ऑफ जार जी जो बिल्कुल। डेटा सामने है, उसको डीपली हाँ, देखना पड़ेगा ना, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बी हाजा, नाउ बी इज अ हर्फ ऑफ जर, देयरफॉर हाँ, you have actually two fragments going on. B haza is harf of jar या and hazal hadisi is pointer fragment. ठीक है, that's what's going on. हुँ, यहाँ पे आ जाते हैं। तिल का आयातु अल किताबी अल हकीमी। Let's try to do सेंटेंस। that. This is a sentence. Very good. Now, can you tell me four properties of ayatu? याद है कुछ? आयातु इज़ रफ़ा, जी, इट्स अ ब्रोकन प्लूरल, सिंगुलर फेमिनिन broken और plural, are you sure? अगर मैं आपको ये वर्ड दूं, I'm taking you back to early classes. I know it will hurt your brain a little bit, नहीं, सही। but it will only help you. ठीक है? हुँ, हुँ, Um, um, ayatan. And I want you to produce the Muslim chart. आयतुन, आयतन, आयतिन, आयता आयातुन, ना नहीं, सही जा रहे थे, एकदम से कुछ हुआ। दोबारा रीस्टार्ट करें गाड़ी। आयतुन, आयतुन, आयतन, आयतिन, Let's do it for Muslimatun. Muslimatun करें पहले। सही। अ, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातान, मुस्लिमातानी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातानी, मुस्लिमतानी। मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, हम्म, मुस्लिमातैन, तिन, नहीं मुस्लिमातिन और मुस्लिमातुन, मुस्लिम मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है। Now बिल्कुल। let's try it with ayatun. आयतुन, आयतन, आयतिन, आयतानी, नहीं, हाँ, आयतानी, सॉरी। चले, मैं पढ़ता हूं पहले एक दफा। लिसन जी, क्लोजली। सही, करवाऊंगा मैं आपसे, ठीक है। सही, 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 सही। पहले मुस्लिम चार्ट। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है। सही। लेट्स डू आयतन। आयतुन, तुन, आयतन, आयतन, आयतिन, आयतिन, आयतानी, आयतानी। आयतैनी, हम्म, आयतैनी, आयातुन, आयातैन, आयातैनी, आयतैनी, आयातिन, आयातिन, मुस्लिमातिन, आयातिन, मुस्लिमातिन। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक आयातिन, है। आयातिन।
वेरी गुड। रिवाइज करना है, ठीक है। लगता है आप सबका मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा। ये वीडियो जो भी देख रहा है, टेस्ट का रिस्पॉन्सिबल जुनेद होगा भाई। ठीक है। सही। आपने जो प्लूरल कॉलम बनाया, जी बिल्कुल। उसमें आपने कहा आयातुन, फिर आपने कहा आयातिन, राइट? बिल्कुल। Ayatun, ayatin. Now, if I pick this word ayatun and I make it light, आया तू। ayathu, this is the word here. ठीक है? सही। Ayathu. ठीक है? As a student of Arabic who knows Muslim charts and who knows all of this, हम्म। when you look at a word like this, you should be able to go back to the prime word ayatun, reproduce everything, 9 words. ठीक हम्म। है? ये आपकी vocabulary है सारी। ठीक है? Ayatun is science. हम्म। नाउ अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। Although it's a fragment, it's a sentence, sorry, it's a sentence, but still Allah has chosen a pointer that is singular feminine. अ, ठीक है? क्योंकि हमने आया तू को भी मेक कंसिडर एज सिंगुलर फेमिनिन। Correct. Because ayatu, although it maps on the feminine Muslim chart, which we learned in the early days, it's 3 plus feminine. The fact, because of the fact it's a non-human, it can also be considered a singular feminine. That's why tilka. You could have said ulaika ayatu. That would have been fine too. हम्म। Okay? Now, ayatu has a relationship going on with the word al-kitabi. मुदाफ मुदाफ इलैह। Mudaf, mudaf ilayh. Al-kitabi has a relationship going on with the word al-hakimi. इट्स ये सो इट्स एक्सप्लेनिंग सॉरी मुझे दी पता है आपको आंसर पता है, यू लुकिंग फॉर द टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी। लेकिन लेट्स डू द फॉलोइंग। लेट्स डिड्यूस द वंस व्हिच आर रिलेटेड विद टू हर्फ्स। हर्फ्स वाला तो केस नहीं है ना ये। नहीं। 2 हर्फ वाले फ्रैगमेंट थे, कौन से थे वो? हर्फ ऑफ नस्ब हर्फ ऑफ जर। थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। ठीक कैन दिस बी एन इदाफा? है। नहीं। नहीं, थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। कैन इट बी अ पॉइंटर फ्रैगमेंट? नो। नो। अब एक बच गया है, सिर्फ एक बच गया जो एक्सप्लेन जिसका नाम एम सिफा से मौसूफ। स्टार्ट होता था। सिफा हाँ? मौसूफ। सिफा सिफा मौसूफ। मौसूफ, बिल्कुल। सो दिस द मौसूफ सिफा रिलेशनशिप। बिल्कुल। ठीक है। तो देर इज, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस आया। हम्म। ठीक है। एवरीथिंग। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लुकिंग क्लोजली, थिंकिंग डीपली। ठीक है। हम्म। और ये जो थिंकिंग डीप है, ये सिंपल हो जाएगी कुछ अरसे में, अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, इट बिकम सेकंड नेचर। ठीक है। बिल्कुल। सो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको तिलका का मतलब पता है, दीज तो होता है, या वैसे दीज होता है लेकिन इसमें दोज होगा क्योंकि बिल्कुल। प्लूरल की बात हो रही है। दोज। अब क्योंकि हमें पता है दिस इज नॉट अ फ्रैगमेंट, इट्स अ सेंटेंस, देयर इज गोइंग टू बी एन इज और आर हियर। ठीक है। हम्म। दोज आर आयात, साइंस। नाउ साइंस, इज इट गोइंग टू बी कॉमन और प्रॉपर? प्रॉपर। Proper. Those are the signs. Then there is a ऑफ of the द book, बुक। and Al Hakim is wise. Okay? बुक ऑफ। The wise book, right? Because it's राइट। Mawsuf Sifa. So बिल्कुल। you are able to do those things if you look closely. Okay? हम्म। Number three. और Ha'ula il qawmi. Fragment or sentence? फ्रैगमेंट। Fragment, clearly. Okay? Why the word ha'ula'i? बिकॉज कौम इज वन ऑफ दोज वर्ड जो कि ऑलवेज प्लूरल कंसिडर होते हैं। Correct. Masculine plural mark होता है. This is collective noun. ठीक करेक्ट है? नाम। Very good. This one is interesting. Hazihi sabili. Sentence or fragment? सेंटेंस। Sentence, because we don't have an al. Is there, why the word hazihi, not haza? इट्स बिकॉज ऑफ सबीली। Because of sabili. Okay. How many words are sabili?
Sabili. Uh, one. It will, G, one Sabil is one word. word. Ye जो है वो second word. Very good, excellent. आपको पता है ये क्या है? Ni and G I. ये I है. This is the attached version of the pronoun No. me और I, me. ठीक है. Me. सबील याद है क्या होता था? Uh, path. Path, path or way, right? Okay. And do you remember the gender of this word? Sabil G, or or four properties. Sabil would be Rafa, Hmm. singular, masculine, common. Okay. Uh, do you remember the story in which we identified bass? Sorry, they are feminine. Feminine. This word is Path, always always feminine because feminine. of Path is bass. always ठीक feminine. है, Yeah. राइट. अब Good. होता यहाँ पे ये है, ये जो यहाँ पे जो चैलेंज है वो ये है कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे पॉइंटर लिखा हुआ है हाजा, हाजी ही, ठीक है, और उसके बाद आपके पास लिखा है सबीली, राइट. अब क्योंकि यहाँ पे ये सबीली के साथ या लग गया ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. अगर मैं सबीली अलग लिखा हो, यूं लिखा हो सबीलू, और फिर यहाँ पे मैं या लिख दूं, ठीक है, तो आप बड़ा इजीली मैच कर लेंगे. आप कहेंगे आई नो सबीलू इज रफा, सिंगुलर, फेमिनिन एंड कॉमन राइट नाउ, ठीक है. Mm. और आई ऑल्सो नो हाजी ही इज रफा सिंगुलर, ठीक है ना, and it's feminine and proper. If you create a mudaf with, for example, सभी, अगर मैं इसको ई के बजाय हु लगा दूं, सबीलू हु, ठीक है, his path, Mm. तो अब आप मुझे कह सकते हैं दिस सबीलू इज प्रॉपर बिकॉज इट्स अ वर्ड बिफोर ऑफ, राइट, एंड द हु इज प्रॉपर, ठीक है ना, Mm. विद मी. तो Okay. द सो इट मैचेस द पॉइंटर. नाउ द प्रॉब्लम इज, जब आपका हु नहीं होता, यानी दिस इज हिम और ही, अगर मी लगाना होता है या लगाना होगा तो ये हो जाता है. आप देखें क्या होता है इसके साथ. अगर मैं हु को रिप्लेस कर दूं ही से, तो इफ आई लीव इट लाइक दिस sabilui, you can't really read it. What when ya Mm. comes and attaches to an ism, it overrides the last haraka completely. ठीक है. तो what Arabs do, they just remove the last haraka. So you don't know what was the last खरा at all. उसके लिए आपको थोड़ी grammatical understanding चाहिए होती है. तो यहाँ पे अगर आप इनकी फोर प्रॉपर्टीज को भी मैच करने की कोशिश करेंगे, you will struggle because you know hazi he is rafa, but you do not know what is sabil. You know the ya because it's a mudaf ilayh, it's jar, Mm. but you do not know the status of the mudaf as such. It's not clear. Understand the problem? बिल्कुल. ठीक है. सो तो ऑल्दो कि आपको यहाँ पे कोई हरका नजर नहीं आ रहा, स्टिल इट कैन बी रफा, Tough. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे एक्सपीरियंस के साथ आपको इंशाल्लाह समझ आएंगी. यहाँ पे सबीली, बेसिकली सबील का वर्ड जो है दैट इज रफा, एंड द हरका विच इज द ओ साउंड इज हिडन बिकॉज ऑफ द या. ओके. सभी ठीक. डोंट वरी सॉरी अबाउट बाद इट में कि जी एक क्वेश्चन इस पे. अभी बताइए. अगर हम इसके हरकत देखें तो सीन के ऊपर हमारे पास फतह है, जी बा के ऊपर कसरा, या के ऊपर सुकून, जी. और ये जो हमारे पास कसरा है ये लाम के नीचे नहीं है. नहीं, ये लाभ के नीचे नहीं है, ये या है बेसिकली. यही, आई डोंट थिंक ये कसरा यहाँ पे होना भी चाहिए, अच्छा. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें ना ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से, दिस इज अ सेंटेंस, इसको ये होना, दिस सेंटेंस वुड मीन दिस path, this is a path,
This is what it means. And to construct this sentence grammatically, जो हाजी ही है इसका स्टेटस रफा है, and this has to be रफा as well to construct this sentence. अगर मैं इसको सबीली बना दूंगा, तो then I am actually going against the grammatical construct of the sentence. ये चीज आपने भी पढ़ी नहीं है, इसको मुब्तदा और खबर कहा जाता है। सही। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो that kasra is either a typo or shouldn't be there. ओके, ठीक। सॉरी। ठीक है, doesn't make sense here. ठीक। बाद में एक और क्वेश्चन, सॉरी। जी बताइए। अभी आप वापस वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएं जो था। जी अब ये हमारे पास है, हाजी सबीलू कि दिस इज़ अ पाथ। जी अगर हमने करना कि दिस इज़ द पाथ। जी, गुड क्वेश्चन। वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, अच्छा, ठीक। इस प्रैक्टिस के बाद हम वो कर लेंगे, सही है। सही, ठीक। अच्छा जी, जालिका मताउल हयात दुनिया, सेंटेंस और अ फ्रैगमेंट? सेंटेंस। Sentence, there is no al after zalika. I think you're getting it. Tilka darul akhirah, sentence, fragment? फ्रैगमेंट। Fragment, very good. Haulai shafa'una, सेंटेंस। sentence, very good, there is no al. Hazani usmani, सेंटेंस। sentence. Ulaika ashabul jannah, सेंटेंस। sentence. Wahazan nabiyyu, फ्रैगमेंट। fragment. Haza rabbi, सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, ट्राई करेंगे? बिल्कुल। करें। सो ये आएगा, दिस इज़ योर जॉब। योर कहाँ से आया? नहीं, दिस इज़ माय रब। ये दिस इज माय रब, माय रब, सॉरी। वेरी गुड, ये दिस इज माय रब, दिस इज़ वेरी माय गुड। इन हाजल कुरान, फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप? इन्ना पे इन्ना। फंसे हुए हैं ना, इन्ना। क्योंकि रट्टा सही नहीं है अभी भी बच्चों, बेटा रिवाइज नहीं किया वो। रट्टा रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, हर्फ ऑफ नस्ब है ये तो पता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना लई तला किन्ना ला अल्लाह, राइट। मैंने आपको कहा था जब बच्चों को डांटे तो हर्फ यूज करें। हर चीज़ के बिल्कुल। ठीक है, इस तरह याद होना चाहिए आपको। इन्ना इज इंडीड और सर्टनली। सो ये आएगा, सर्टनली दिस, नहीं, हाजल कुरानी। अब ये अल जो है, ये द बुक के कॉन्टेक्स्ट में है। हमने फ्रैगमेंट में क्या सीखा था? हमने फ्रैगमेंट में सीखा था कि अल इज नॉट देयर टू ओनली मेक दिस ism प्रॉपर, बट इट्स आल्सो देयर टू एक्चुअली टेल यू इट्स अ फ्रैगमेंट। सो यू डोंट नॉर्मली ट्रांसलेट, कैसे ट्रांसलेट हुआ हुआ यहाँ हाजल दिस कुरान? कुरान। जी, अब बताएं, कैन यू ट्रांसलेट दिस? उप्स, कहाँ चला गया मैं? अच्छा हाँ, यहाँ। सर्टनली दिस कुरान। Certainly this Quran. This entire thing is a fragment, not a sentence. ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्रैगमेंट्स प्ले कर रहे हैं, एक इन्ना हाजा और एक हाजल कुरान। कुरानी। ठीक है, certainly this कुरान, फी हाजल कुरानी। अब इसमें एक छोटी सी सेटेलाइटली देखें, छोटा सा पॉइंट है इसमें। The only difference between these two sentence pointer fragments is Qur'ana कुरानी। and Qur'ani. ठीक है, and that difference is made by fi फी। और inna. फी हरफ जर की वजह से जी, हाजा would be consider jar, jar and then al Qurani will will become be considered jar, jar। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी एक लफ्ज चेंज हुआ, कॉन्टेक्स्ट आगे चीज, और डेफिनेशन में क्या फर्क पड़ा? इंडीड दिस कुरान इज इन्ना हाजिल हाजी हाजिल कुरान, इन दिस कुरान। Indeed, this Quran versus in this Quran, there is lots of difference. हम्म।
right? In the meaning. बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही है। हुँ, तो छोटा सा पॉइंट है, और अगर आपको ये नॉलेज ना हो ये वाली जो आप अभी सीख रहे हैं, तो इट कैन बी मिस्ड आउट वेरी क्विकली। ठीक है। इन हाजा अदुवुन लका, this is sentence. दिस इज अ सेंटेंस। तिलका मिन अंबिया इल गाइबी, Sentence. sentence. هذه الشجرة, Fragment. this is the fragment. So shajara means tree. So Mm, this tree, basically. Okay. هذه من عندك, Sentence. sentence. هذه ناقة الله, Sentence. sentence. Very good. So you get the idea, right? बिल्कुल। So sentence versus fragments और उनकी जो छोटी मोटी complexities हैं, तो I hope that clarifies to you what it is. अब हम एक चीज कर लेते हैं। It is not in your notes, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा है, that is not part of your notes. तो मैंने उसको later बात के लिए छोड़ा हुआ था, but now because you have asked that question, so I'll tell you. ठीक है? So you were saying कि we know how to do, we know how to do has a kitab. That's what we know. Uh, Sorry, आप कह रहे हैं this is the book कर रहे हैं ना? हाँ, जी, बिल्कुल। सही है। आप कह रहे हैं हमें ये तो पता है how to do this is a book. How to do this is the book. ठीक है। और इसमें इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर मैं हाजा लिखूं, यहाँ पे मैं कहूँ हाजा, and I say kitab, and I say kitab is a book and the book is al kitab. ठीक है। If I do this, so what have I done? Converted into a I've sen converted it into a fragment. So I can't just put an al like that. कि मैं प्रिंसिपल तोड़ देता हूँ सेंटेंस का। ठीक है। So because of this problem, this is going to be translated as this book, not this is the book. ठीक है। So what you do is you actually bring a friend of Haza and Al Kitab, which is another ism, and you say, okay, hey, pronoun, can you help us? Because the problem is, if I don't have an al, I can't be the. And Haza says, if Kitabu has an al, I can't make a sentence. So there is a conflict. So what you do is you actually pick up a pointer that matches Haza or this ism. If you were to represent this al-kitab with a pronoun, sorry, with a pronoun, which pronoun would go for it? It's a huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Which pronoun do you think could represent al-kitab? Is it masculine or feminine word, al-kitab? uh, feminine? It's a feminine word. And Uh, oh, no, 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 no. Al-kitab, oh, four Al-Kitab is the properties. masculine. Masculine. Masculine, Al-Kitab is masculine. Is it plural, singular, dual? it's a singular. Singular. So let's pick up a singular masculine pronoun. Uh, who or ha? Hua. ठीक है? Hua is a singular masculine pronoun. ठीक है? So this one, right? Now, because you know Hua, what you are going to do is Hua is going to become an intercessor between the Haza and Al Kitab. So Hua says, okay, Haza and Al Kitab, you can't solve this problem. What I'll do is I'll come right in the middle. هذا هو ठीक है? الكتاب. I'll come right in the middle just to help you to solve the problem, because I want kitab to stay al, and I want haza to have a word that is not having al after it, right? Mm. So haza needs no al after it and kitab needs al. So if I come in the middle, both of you will fulfill your requirements, right? But when you go and translate, don't translate me, because I'm just here as a helper, right? सही. So
So what you do is you basically put a pronoun that goes with this ism in the middle of the pointer and the word, right? And in that case, you would be able to translate as this is the book. There is no translation of this pronoun. You will not translate it because it's just to construct this grammatical structure. ठीक है? सही कई लोग ये कर देते हैं इसको, जब स्टूडेंट्स न्यू होते हैं ना, वो कहते हैं दिस इज ही इज ए द बुक, Oh, okay. which does not make sense. ठीक है? You don't need this part. This can be striked away. सही ठीक है? बिल्कुल um, this is the path. This is the path. So we have the word sabil. Okay. Let's try to construct this once as one more example, and then inshallah we'll call it a day. So Junaid is going to help me a little bit. Okay. So Junaid, first I want to construct the simpler one. Okay. This is a path. هذا سبيل هذا I, سبيل I will write what you say and then we'll improve it. Okay. Haza sabilun. Okay. Now, what are the four properties of sabilun? رفع Ji. singular Hmm. masculine common Are you sure it's masculine? oh sorry feminine sorry And why is it feminine? bass Bas. Bilkul. So what should change? سبيلو नहीं sorry Sabilun. नहीं sabilun तो मैंने normal ism लिखा हुआ है ना रफा status में. So if sabilun is feminine, what should change in this هذه entire thing? Yes, هذه you need hazihi, not haza. ठीक है? هذه سبيلو This is a path. सही ठीक है? Now I want to make this is the path. ठीक है? The path. And my problem is Hazihi is fighting with Sabilun, saying, hey Sabilun, don't take an al. ठीक है ना? Sabilun says, no, if I don't take an al, I can't be the path. But I have to take an al. I have to be as Sabilun. I have to be that. So how do we solve a problem? Because we now become a fragment. So the process goes, you take the ism that you're pointing to, you know the properties of this ism. You basically need to know the properties, and you know it's singular feminine. You go through the pronouns chart in your brain, not in your book, okay? And pick up a singular feminine pronoun. singular feminine Third person. Third person. Pronoun chart याद है? वही रिकॉल करना चाह रहा था अभी हुआ से स्टार्ट होता है. हुआ सॉन्ग्स भी हुमा भेजे होम थे. हुआ हैं? हुमा होम हम्म. he हुआ हुमा होम ही हुमा हिमा हिया हुमा हिया हुन्ना. हुमा हिमा इनफ है यहाँ तक. इनफ है यार. इसी में आंसर है आपका. अभी इसी में आंसर है आपका. ठीक है. इसी में एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर फेमिनिन है. है हिया हिया. ठीक है. दैट्स सिंगुलर फेमिनिन. सो यू विल ब्रिंग हिया एज एन इंटरसेसर बिटवीन them. हिया सभी Now because of this here, हाजी ही says कि ठीक है, I have an ism after me without a null. I'm happy. As Sabiri says, okay, I am having an al, so I'm happy too. Okay. So this structure would translate to this is the path
but हिया is not going to be translated ओके, because just helping the structure. ठीक है, सही। सही है। अगली क्लास में मैं सबसे सारी चीजें सुनने वाला हूँ। हर्फ ऑफ नसब, हर्फ ऑफ जर, प्रोनाउंस, मुस्लिम चार्ट्स, पॉइंटर चार्ट्स। ठीक है जुनेद? सही है, मैं तो याद कर चलो लूँगा, सही है, ठीक है। बाकियों का थैंक्स कुछ फॉर पता नहीं। टेकिंग द करेज टू लर्न अलोन। सही अकेले बात पढ़ना आसान नहीं होता, आई नो है। दैट। ठीक है, और जब टीम नहीं होती ना तो वो वाला एनवायरनमेंट भी नहीं होता, लेकिन आई थिंक यू डिड अमेजिंग। थैंक यू वेरी चले, मच। थैंक यू जुनेद, अस्सलाम थैंक यू जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।